सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे आपको पता है हम लोग वोल्टर वाइट का स्केच बना रहे थे। तो इससे पहले हम लोग के 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, इसके 2 एपिसोड्स 2 लेसन, तो 2 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग ने आउटलाइन कैसे बनाते हैं पूरी मैंने बताया था, और फिर सेकंड पार्ट में हमने आइज और नोज़ को कंप्लीट किया था। तो अभी इस पार्ट में हम लोग हेड्स और फोरहेड को ट्राई करेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे। और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों का। तो आप पहले वो पार्ट देखो, वो दोनों को ड्रॉ करो, फिर ये वाला वीडियो देखना। तो अभी हम लोग फोरहेड और हेयर को ड्रॉ करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा कि कैसे करना है। तो लेयर बाय लेयर ही जाएंगे हम लोग, पहले HB से लेयर, फिर 2B से थोड़ा डिटेल, फिर 4B से डिटेल और ख़त्म। फिर जो डिटेलिंग रहेगा वो ऐसे ही कर लेंगे। तो फटफट शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि फ़र्स्ट हम लोग HB से लेयर करेंगे, तो हम लोग फ़र्स्ट HB से ही लेयर कर रहे हैं। फिर अच्छे से मैंने ब्रश से ही ब्लेंड किया इस बार, क्योंकि मैंने शेडिंग अच्छे से की थी। अगर अच्छे से, जैसे यहाँ इसमें लाइंस आपकी दिख रही है शेडिंग में, तो आप थोड़ा स्टम्प्स का यूज़ करना, तो ऐसे ज़्यादा ब्रश से ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर मिलता है। तो मैंने ऐसे किया। फिर उसके बाद मैंने यही किया, HB से लेयर किया, फिर 2B का लेयर दिया, फिर 4B से दिया, और यहाँ जो साइड का डार्क एरिया था मैंने उसको 10B से लेयर दिया हूँ। तो 10B से लेयर दिया हूँ, और सबको मैंने AY मतलब पहले एक किया फिर 2 किया, मतलब एक लेयर को कंप्लीट करके फिर दूसरे लेयर को करना है। मतलब पूरा हेड पे पूरा एक लेयर किया हूँ, फिर बाकी बाद में एक और लेयर चढ़ाया हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने किया हूँ सब। और डिटेल्स के लिए मैंने यही अप्सरा का इरेज़र यूज़ किया, नीडेबल इरेज़र, और 4B की लीड मतलब 4B की पेंसिल यूज़ की मैंने। तो ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ा। और हेयर्स में जो भी पता है उन तीनों चीज़ों का यूज़ करके मैंने डिटेल किया। वो अप्सरा का इरेज़र को मैंने शॉर्प करके थोड़ा पॉइंट कर लिया था, तो अच्छे से मैंने डिटेल दे दिया। तो मैं आगे भी स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा कैसे करना है। तो अभी ड्रॉ करो। We grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. To numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.
I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days, because I miss you, and I just thought of you. The idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope you do. Even if things never go back to what we were, what I became so used to, what I thought would be forever. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. सो गाइज हेयर में मैंने शुरू किया सबसे पहले शेडिंग से। तो मैंने पहले HB से शेडिंग किया, फिर 4B से शेड कर दिया जो एक हेयर का डार्कनेस का क्रिएट हो। फिर उसके बाद मैंने रैंडम स्ट्रोक्स दिए, पेंसिल को थोड़ा लीड बढ़ा के शार्प करके अच्छे से
फिर मैंने ऐसे स्ट्रोक्स दिए। फिर उसके बाद इरेज़र से मैंने वाइट डॉट्स दिए जहाँ मेरे को लगा। फिर मैंने उसको वैसे ही किया है। फिर उसके बाद ऐसे ही रैंडम डॉट सब में मार के सिर्फ वाइट एरियाज़ को देख के मैंने अच्छे से किया है, वरना फिर ब्लैक जो किया वो मैंने रैंडम स्ट्रोक्स दिया है। फिर उसके बाद ये करने के बाद मैंने फिर उसके हेड में वापस देखा कि कहाँ ज़्यादा डार्कनेस है। फिर उसको मैंने 4B की पेंसिल से वापस से उस एरिया को पूरा शेड किया हूँ जो डार्कनेस ऑप्ट हो। तो आप भी उसको वैसे ऑप्ट कर सकते हो। हम वापस आ चुके हैं। हमारी ड्राइंग भी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे मैंने बताया था हेड को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हेड और हेयर दोनों कंप्लीट कर दिए। तो इसका मैंने अलग से क्यों ट्यूटोरियल बनाया कि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसमें यहाँ पे डिटेल कैसे देनी है, क्योंकि इसमें एक हेयर से देखो ये यहाँ पे तो एक डॉट देना और हाईलाइट भी ढंग से देना था। तो मैं बोला कि इसका अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, मतलब हेड का अलग से बनाएंगे। मैंने मैं सोचा था कि ये लिप्स और बियर्ड के साथ में हेयर भी कंप्लीट कर दूंगा तो पूरा फेस हो जाएगा, और फिर बैकग्राउंड और क्लोथ का बाद में करेंगे। मगर वैसे नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बताना था। तो पूरे अच्छे से ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, आधी ही हुई है। जितना हेड बताया था उतना कंप्लीट हो चुका है। और ये एरिया को मैंने ज़्यादा डार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जैसे ये दिख रहा है बैकग्राउंड, तो वैसे ही बैकग्राउंड भी ब्लैक करेंगे। तो जब हम लोग ये पाउडर यूज़ करेंगे ना, क्या बोलते हैं, चारकोल पाउडर, तब मैं वो पाउडर लेके इधर भी कर दूँगा, क्योंकि पेंसिल से ऑप्ट करना थोड़ा हार्ड हो रहा था। तो जब वो पाउडर यूज़ करूँगा तो यहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई करके डार्क कर दूँगा, जब बता दूँगा। फिर अगला पार्ट में हम लोग इतना एरिया कंप्लीट करेंगे। ईयर्स आपको दिख रहा नहीं होगा अभी, वो थोड़ा वो है लाइटिंग कंडीशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इतना ये तो हो गया, नोज़ कंप्लीट हो गया। तो ईयर्स और इतना एरिया कंप्लीट करेंगे। फिर अगले पार्ट में क्लोथ्स, बैकग्राउंड और ये नेक कंप्लीट करके पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर देंगे। तो ड्राइंग कैसे लग रही है कमेंट करना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।